Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 exam, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which today we are going to see topic settlement of industrial disputes, and this is part 1. पार्ट 2 का हम लोग नेक्स्ट में करेंगे. सो हियर व्हाई इज दिस सीरीज इंपॉर्टेंट और व्हाई आर दीज टॉपिक्स इंपॉर्टेंट. सी क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड out of 120 from these topics only, that is labor laws and industrial relations. be it APFC का पोस्ट या फिर A और EO का, दोनों के लिए भी यही ऑलमोस्ट यही पैटर्न है, ओके, विच इज एक्चुअली वेरी गुड नंबर. सो आप थोड़ा सा बेसिक्स भी सही से कवर कर पाओगे तो यू कैन easily answer or easily solve 10 plus questions. So here you can understand, by this you can understand the kind of high weightage it has and high scoring potential it has. So अगर आपको सही में स्कोर हाई करना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस सीरीज, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना, जो भी कंटेंट कवर कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड रिविजन भी हो जाएगा. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 वेरी सून. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीरीज. So I hope you will utilize this series very efficiently for your exam preparation. With this, let me start today's session. Moving on to the first question. A group of factory workers demands higher wages, but the management refuses to negotiate. Initially, the workers attempt to resolve the issue through direct discussions, but no agreement is reached. Now they then involve in a neutral third party to help mediate the dispute, but even after multiple rounds of talks, no resolution is found. Eventually, the workers decide to stop working altogether to pressure the employer. So in this scenario, which stage of dispute resolution has the workers ultimately chosen? So सबसे पहले जो simplest way of settling any dispute between the employer and the workers is bargaining, जहाँ पे mutual discussions के through वो होता है. तो bargaining उन्होंने कोशिश किया था, but it didn't happen. So after that एक neutral third party के through they have tried to mediate, बट वो भी नहीं हुआ है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज बार्गेनिंग विथ कंसिलिएशन. ठीक है, नाउ ये दोनों भी नहीं हुआ है तो दो और ऑप्शन है इनके पास. ईदर स्ट्राइक कर दे, दैट इज वन ऑफ द कोर्सिव मेथड्स, ओके, जिसमें स्ट्राइक आता है, या फिर आर्बिट्रेशन, लीगली वो प्रोसीड हो जाए, जहां पे आर्बिट्रेटर विल लिसन टू बोथ द साइड्स एंड देन बेस्ड ऑन दैट ही वुड डिसाइड. सो हियर नाउ सब फेल होने के बाद कोर्स जो नेक्स्ट टू मेथड्स में जो आता है, दैट इन दैट दे हैव टेकन अप द कोर्सिव मेथड्स, दैट इज स्ट्राइकिंग. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. A dispute arises between a group of employees and their employer over workplace safety conditions. They initially try to resolve the matter through discussions but fail to reach an agreement. The dispute is then taken to the neutral third party. The third party listens to both the sides, reviews evidence, and ultimately imposes a legally binding decision on both the parties. Which method of dispute resolution is being used in this scenario? अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो दिल गो फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके बाद बार्गेनिंग विथ कंसिलिएशन. अगेन यहाँ पे भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा एंड दे विल लिसन एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. नाउ अगर वो भी फेल हो गया तो देन दे विल गो फॉर ईदर कोर्सिव मेथड्स लाइक स्ट्राइक एक्सेट्रा और आर्बिट्रेशन. नाउ यहाँ पे जब आर्बिट्रेशन का होता है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी होता है एंड दे विल लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड देन रिव्यू द एविडेंस एंड ऑल दैट एंड अल्टीमेटली डिसाइड्स, जो भी जजमेंट देगा. ना व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन? वहां पे भी थर्ड पार्टी है, लेकिन कंसिलिएशन में क्या है, कंसिलिएशन या मीडिएशन, इन बोथ केसेस they do not enforce, the third party does not enforce a binding decision. But when it comes to arbitration, इसमें एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन होता है जिसको दोनों को ही पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
वही कंसिलिएशन या मीडिएशन में अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब वो दोनों पार्टीज में कोई भी पार्टी नहीं माना, दे कैन गो फॉर अनदर मेथड फर्दर. Okay, this is a major difference between arbitration and mediation or conciliation. So here in this case it is arbitration क्योंकि legally binding decision होगा. Moving on to our next question. In a labor dispute at a manufacturing company, a neutral third party is brought in to help both the employer and the employees reach a mutually agreeable solution. The third party facilitates discussion, suggests possible solutions, but does not impose a binding decision. Which method of dispute resolution is being used in this case? So simple अभी तक हमने देखा है. Arbitration मतलब again legally binding, यहाँ पे it does not impose legally binding decision, so it would be conciliation. Litigation क्या है? Again it's same thing. जो अगर कुछ dispute हुआ है, एक litigation हुआ है, now that is in the court. तो यहाँ कोर्ट इन्वॉल्वमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल सिंपली सेड लिटिगेशन. सो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे भी बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग डिसीजन होगा. नाउ एडजुडिकेशन क्या है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीगल प्रोसेस वेयर एक ऑफिशियल अथॉरिटी, ईदर अ ट्रिब्यूनल या कोर्ट, इट मेक्स अ डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट. Okay, so here also it's not the case. So here it is a conciliation that we are talking about. Moving on to our next question. XYZ Limited is a textile manufacturing company with 120 employees. To ensure smooth employer-worker relations, the company decided to set up a statutory body as per Section 3 of the Industrial Disputes Act 1947. So जहाँ पे भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वर्कमैन, the industry has to come up with the works committee which would have representatives of both employers and the workmen or the employees. Okay, so इससे क्या होगा, जो भी disputes या फिर कुछ दिक्कतें हो रही है, this works committee can look into them for resolving. So here however, the management wants to ensure that their representative outnumber those of the workers in the committee. Now, which of the following statements is correct regarding the composition of the statutory body? जो ये works committee होगा, उसमें members, number of members किस तरह से होंगे? Here always जो worker representatives है वो and जो हमारे मैनेजमेंट है, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. सो हियर द नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड ये कमिटी इज कॉल्ड एज द वर्क्स कमिटी अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. Moving on to our next question. A large automobile manufacturing company employing 150 workers is experiencing friction between the management and the workforce due to workplace safety concerns. To address these issues proactively, the company decides to form a committee consisting of the representatives from both the management and workers to discuss the grievances and suggest the improvements. Now, this is as per the Section 3 of the Industries Act 1947. Now what is this committee called? अभी हमने डिस्कस किया था, सी जहाँ पे भी 100 मेंबर्स के ऊपर रहेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल यूनिट में, देयर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 सेक्शन 3 के हिसाब से, देयर दे हैव टू गो फॉर ए कमिटी वेयर इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्कमैन एंड द मैनेजमेंट शुड बी देयर. एमिकेबली जो भी डिस्प्यूट्स कुछ होंगे, फ्रिक्शन जो होगी, वो दैट कैन बी ब्रॉट डाउन so that harmony can be brought in the unit. So here in this case this committee is called as, अभी हमने डिस्कस किया था, this is called as the works committee. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. During a conciliation process, which of the following statements best describes the role of the conciliator? अभी हमने देखा था कि when we talk about the conciliator, he has certain दे कैन नेगोशिएट, मतलब एक उनके डिस्प्यूट को सुनो पहले से दोनों पार्टीज का, एंड देन अकॉर्डिंगली फैसिलिटेट द एनवायरमेंट फॉर देम बोथ द पार्टीज टू डिस्कस ऑन द डिस्प्यूट एमिकेबली, एंड उसके बाद एक
डिसीशन पे पहुंचना, एक रेजोल्यूशन पे पहुंचना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कंसिलिएटर हैज टू डू, एंड उनका कोई रोल नहीं रहता लीगली बाइंडिंग कुछ जजमेंट पास करे. सो हियर इन दिस केस द कंसिलिएटर लिसन्स टू द पार्टीज, identifies the issue and facilitates discussion. Okay, he will facilitate the discussion without making any binding decision. So वही discuss करेंगे parties ही, and they are the ones who will arrive at a solution. Conciliator का majorly ये है कि he will be facilitating the discussion. So here D is the correct answer. Now, which of the following statements correctly describes the role of a conciliation officer under Section 4 of the Industrial Disputes Act 1947? Now, Section 4 of the Industrial Disputes Act 1947 looks into the appointment of conciliation officers to whom the industrial disputes shall be referred for conciliation. And here in this case, the conciliation officer is responsible for investigating the industrial dispute and making efforts to bring both the parties to a settlement. But इनका कोई authority नहीं होता है कि कुछ fines impose करे या फिर कुछ legally binding decisions दे. Okay, so here B is the correct answer. Now, which power is not enjoyed by a conciliation officer under Section 11 of the Industrial Disputes Act 1947? Now, Section 11 says of the Industrial Dispute Act 1947, it gives about the powers of a conciliation officer. क्या-क्या powers होते हैं उनके? He enjoys all the powers of a civil court, wherein he has a power to examine the facts relevant to the dispute, the power to conduct conciliation proceedings, जहाँ पे he will be listening to both the parties and facilitate in dispute resolution, and he has a power to send a full report to the government in case of settlement failure. Yes, अगर settlement failure हुआ है, he has to send a full report to the respective appropriate government as per the industry it is in which the dispute has been being resolved. Next, the power to impose fines on parties who refuse to settle. ये power नहीं है क्योंकि legally binding नहीं है यहाँ पे. So here C is the correct answer. When does a dispute get referred to the Board of Conciliation under the Industrial Disputes Act 1947? See, यहाँ पे as per Section 5(1) of the Industrial Dispute Act 1947, the Board of Conciliation is actually a tripartite ad hoc body. Ad hoc body क्योंकि उस टाइम पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ रहेगी, consisting of a chairman and 2 to 4 other members. Now, whenever the conciliation officer fails to settle the disputes within 14 days of that being referred to the conciliation officer, then the matter will be passed on to the Board of Conciliation. So 14 days के अंदर that has to be done. So here it is a correct answer. Moving on to our next question. Under Section 10(3) of the Industrial Disputes Act, what can the appropriate government do when a dispute is referred to the Board of Conciliation? जब भी conciliation officer नहीं कर पा रहा है and that dispute has been referred to the Board of Conciliation, then the government may prohibit the continuation of any strike or lockout in case of such dispute, so that यहाँ पे discussions होते रहेंगे, negotiations, and on the other hand वो halt पे नहीं आएगा, because again that would impact not only the unit but also the workers and overall the economy as such. So the appropriate government can take such a decision. So here B is the correct answer. Now, what does Section 13 say of the Industrial Dispute Act? It mentions about the role of the Board of Conciliation. So here what happens when the Board of Conciliation fails to settle a dispute within the stipulated time under Section 13? Now, stipulated time क्या है? Now, whenever Board of Conciliation के पास जाता है dispute, then they have to submit the report. In both the cases, अगर conciliation नहीं हुआ है, नहीं हो पाया dispute resolution, तब भी उनको report भेजना पड़ता है, and even if conciliation हो गया है, so along with their recommendations they have to send the report to the appropriate government in both the cases. Okay, now in both the cases the report is required to be submitted within 2 months from the date of reference of the dispute to the Board of Conciliation. Okay, or within a shorter period as already mentioned by the
appropriate government. So that they have to do. So here the board sends a full report and its recommendation to the appropriate government. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. As per section 19, if no specific date is agreed upon by the parties, when does settlement come into effect? Okay, जहाँ पे भी now dispute गया है, ओके डिस्प्यूट होने के बाद वो रिजॉल्व हो गया है एंड दे मस्ट हैव साइन समथिंग कि ओके वी आर एग्रीइंग अपॉन दिस कंडीशंस एंड ऑल दैट, राइट. नाउ इन दैट केस अगर कोई डेट नहीं मेंशन किया कि इस डेट से ये जो डिस्कशन हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, इसका इम्पैक्ट होगा, मतलब या फिर ये लागू होगा इसके ऊपर, इट वुड बी एप्लीकेबल. सो अगर उस तरह से नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है, तो देन जिस दिन ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ है उसी डेट से वो देखेंगे कि दैट सेटलमेंट विल कम इनटू इफेक्ट. सो हियर ऑन द डेट द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड, वहां से होगा. अगर कोई पीरियड उन्होंने एग्री किया है, देन विद इन 6 months ओनली द डेट शुड बी देयर. ओके, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड, वो होना चाहिए. अगर डेट नहीं है तो उसी डेट से वो applicable होगा. So here D is the correct answer. Moving on to our next question. XYZ Limited is facing a dispute between its management and workers regarding wage hikes. After multiple negotiations, the matter is referred to the Board of Conciliation. Eventually, settlement is reached and documented. Sab ho gaya settlement, everything has been done. Now, as per the Industrial Disputes Act 1947, especially under section 18(2), who among the following will be bound by this settlement? So here जब भी कोई इस तरह से settlement होता है, till the time फिर उसको revise नहीं किया जाएगा, then it will be applicable and to the employer, all current workers, future employees of XYZ Limited and the employer successors. सबके लिए भी ये applicable होगा. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. ABC Textiles Limited has been facing an ongoing wage dispute between its management and the workers. The dispute was referred to the conciliation officer, who held several meetings between both parties. However, after multiple discussions, no agreement was reached. Under which of the following circumstances would the conciliation proceedings be considered concluded as per section 22 of the Industrial Disputes Act 1947? Now, whenever the conciliation officer submits a report to the appropriate government regardless of the outcome, then we can say that वहाँ पे उसका conclusion हो गया. Now that would be referred to the conciliation board. Okay, और वहाँ से वो जो भी करेंगे, then that is or any higher authority के लिए चला जाएगा. So here it will be concluded when the conciliation officer submits a report. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the court of inquiry under the Industrial Disputes Act 1947. Which of the statements given below are correct? Now, in case the conciliation proceedings fail to settle the industrial dispute, the appropriate government can go for appoint a court of inquiry as per the section 6 of the Industrial Disputes Act 1947. See here, a court of inquiry is appointed by the appropriate government when reconciliation proceedings fail to settle in an industrial dispute. Yes, this is very true. Under section 6 of the Industrial Disputes Act 1947, this is true. A court of inquiry must consist of at least 10 members including a chairman. No, here 2 or more members, ज़्यादा नहीं, including the chairman होना चाहिए. So ये false है. Under section 11, the court of inquiry has the power to appoint assessors with special knowledge to assess the proceedings. Yes, जहाँ पे भी कुछ technical knowledge की ज़रूरत है, ऐसे कुछ वो ला सकते हैं किसी assessor को. Next, as per section 14, the court of inquiry is required to submit a report within 6 months from the commencement of the inquiry. Yes, this is also true. Within 6 months that has to be submitted. So here 1, 3, 4 are true. So B is the correct answer. So friends, hope you have liked this session. Before winding up the session, I have a small announcement. Currently, EduTap is offering 3 major courses for all those students who are attempting or targeting UPSC EPFO 2025 examination, be it APFC और EO और AO दोनों के लिए भी ये कोर्सेज होंगे. So सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जहाँ पे ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 1 पॉइंट सोर्स चाहिए उनको सारे कंटेंट के लिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स.
जो इस एग्जाम में आते हैं. सो हियर यू विल गेट ऑल द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, कोर्स, वीडियोस, chapter quizzes, tests, everything. Along with that, every week Kuldeep sir, to be precise on Thursday, he'll take a strategy session so that आपके जितने भी डाउट्स है वो रिजॉल्व हो सके. एंड कंटेंट को किस तरह से स्ट्रैटेजिकली आप लोग यूज करके अपना प्रिपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, दैट यू कैन गेट हियर. नेक्स्ट इज द टेस्ट सीरीज प्लस. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो एक आधा सब्जेक्ट ही चाहिए, बाकी सब हम लोग पढ़ लेंगे, प्लस हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो यहाँ पे उस तरह से आपको मिल जाएगा. थर्ड होगा टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज ये उनके लिए है जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन पूरा कर चुके हैं अपने हिसाब से, वॉट एवर वे. नाउ दे वॉन्ट टू गो फॉर सम practice questions. So उनके लिए ये the best रहेगा. So if you have any queries related to any of these courses, you can always reach out to the team members, and description box में भी सारे courses के बारे में clearly mentioned है, क्योंकि वहाँ से आप देख के अपने हिसाब से courses choose कर सकते हैं. Hope you have all liked this session. See you all soon with the next session, and thank you very much for being with me here. Thank you once again. Thank you.